Student, this is your questions is based on MCQ. When the liquid is pumped rapidly, the denser particles are forced to the bottoms and the light particles stay at the top. This principle is used as, it means तो आपके पास हैवी पार्टिकल्स होंगे बॉटम में होंगे और जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो अपर लेयर में आ जाते हैं. ठीक है. दिस इज प्रिंसिपल इज साइंटिफिकेशंस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, evaporations and turning. Now your answer is sanctifications is your answer because it is a process. Okay, now you will be converted to butter from curd. Clear or not? You also read in your notes of chapter number 2. Clear or not? Next question है, what is the name of the matter which exists in liquid state at room temperature? Now first one is mercury, next bromine, next sodium, next potassium. Now your answer is bromine. फिर इसका आंसर ना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए लगाइएगा, मरकरी. ओके, ये मिसप्रिंट हो रहा है ब्रोमीन, इसका आंसर ए है मरकरी. क्लियर नॉट? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नॉट अ मेटलॉइड? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टंगस्टन. क्लियर नॉट? दिस क्वेश्चन योर आंसर इज टंगस्टन. टंगस्टन इज अ एलिमेंट विच इज नॉट अ मेटलॉइड. क्लियर नॉट? ओके. Now your next question, if we put camphor in an open container, its amount keeps on decreasing due to phenomena of. इट मीन्स जब आप कैम्फस पाउडर को किसी कंटेनर में ऐड करते रखते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे जब आप ओपन कंटेनर में रखेंगे तो ऑटोमेटिक उसका साइज, उसका जो अमाउंट होगा वो डिक्रीज हो जाता है. तो दिस इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस. फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन, नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट सब्लिमेशन. नाउ योर आंसर इज सब्लिमेशन बिकॉज सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ मैटर्स can be changed directly in gaseous form without coming in liquid state. Clear or not? It means आपने पहले भी ये कोई एक्सरसाइज जैसे आपने देखा होगा घरों में आपके कपूर होता है, वो डायरेक्टली क्या होता है सॉलिड पार्ट सीधे कन्वर्ट किस में हो जाता है गैसेस में और बिना लिक्विड में आए. क्लियर और नॉट? इट मीन्स सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है. ठीक है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ सॉलिड पार्ट या solid substances can be converted in gaseous state without coming in liquid state. That is the property of sublimations. Clear or not? Now your next question is, heterogeneous mixture in which the solid particle do not dissolve and remain suspended throughout the solvent and the solid particle can be seen with the naked eyes is known as. It means heterogeneous mixtures is which the solid particles do not dissolve because their particles too big and cannot complete easily dissolve it. Clear or not? And remain suspended throughout the solvent. It means their particles too big and suspended throughout the solvent. And the solid particle can be seen because the solid particles too big and easily you will be seen with the naked eyes. Clear or not? Now it is a process of colloidal solution. It is a solution of colloidal solution, supersaturated solution, sublimation or suspension. You also know that you will already read in your chapter number 2 notes. Suspension is a property which particles too big. Clear or not? Now your answer is suspension. Now see here, suspension because suspension is a solution which particles too big and their particles or solute cannot be dissolved in solvent. Clear or not, my dear student? If you have any problem, now you will tell me. Clear or not?